Hello everyone. Today we are going to discuss uh, Civil Services Mains 2022 GS3 economic papers, 3 questions. Question number 1, 3 and 4. What is our objective? See, there are many model answers in the coaching space you will find. But our objective is not only to provide a very, I will say, refined model answer, but also help you improve your thought process. How to think. Let's say there is a question on PPP, infrastructure, food processing, what resources you will use, how that model answer will come up. So that not only that model answer, that process also we have to share with you. So let's start. This is your question 2022, 2022 paper, CSC, Civil Services Mains. These are Civil Services Mains PYQs, right? What is the question? What is public-private partnership? Why is public-private partnership required in infrastructure project? See, the first most important thing is you should read the questions in mains carefully, not only mains, also in pre. Once you read it carefully, their keywords, then you understand, okay, what to write. And before that, what is the process? Let's say this is the question on infrastructure. Now, what happens? Let's say you are preparing. So what you will do, suppose there is a chapter on infrastructure in economic survey. Infrastructure, when you talk, it includes both social and physical infrastructure. For instance, if you take economic survey of 2023, right, I think chapter number 12 or 11 or 12, I think 12, right? So that chapter, if you read that, if you summarize that, I think that will complete your almost 70-80% answer. Other thing, other points you can get from NCERT, some paragraph written in some particular. So what you have to do, you have to keep your notes ready. Let's say how you do it. You will make notes on infrastructure. Then while reading economic survey, you will take some points. You will note in that. Then if you suppose you are reading NCERT related to infrastructure, any chapter, you will note down that point and you will keep on revising that and gradually you will see, first, let's say in the first iteration, you made a 5-page notes. Then after 2-3 revision, you will cut down that unnecessary words. Then you will concise it. Then you will read something else. So after that, you will see that you're in, I call it 2-pager. 2-pager means a sheet like this, on A4 sheet, and it should be concise. Your notes should be so concise, so refined that no one should be able to understand them other than you. That is an indication of good notes. If you remember, in the last lecture, I shared with you some notes of GS3. Those are difficult to decipher, but this is the way you have to make notes. So you understood the process. This is how your mind will work, and it will take time, right? For let's say even for this question, when you practice it for 3-4 times, then you will see that that wow moment. Yes, now you will say, okay, if I write this this kind of answer in UPSC, then I might score 115 plus in mains in GS3, depending upon the scaling year by year. I can assure you, on behalf of our institution, I can assure you, if you write answer like this, no one can stop you, scoring 115 marks in GS3. That is, given. But again, that process is more important. Let's say you just read this answer. You note that point. No, I think that will only complete your 10% work, right? Not even 10%. What is equally important is after going through this video, understanding the process, then you have to read that particular economic survey chapter. See, you have to ask yourself whether you are making notes on infrastructure or not. That is more important. Okay. So given this background, now we will start with question number 1. Why is public-private partnership required in infrastructure project? So they are particularly talking about infrastructure project. Then examine the role of PPP model in the development of railway station. See, it is not railways, it is railway station in India. So question is very clear cut. It was 10 marker. I have written, it's a little bit lengthy, but I'm sure
you will find this answer very, very helpful. Now, there is a question, what introduction you are going to write? Generally, people say that we have to write introduction, right? Now, see, for introduction, what you do not write anything randomly. Try to think. You can write a simple definition about PPP, right? Or let's say do not try to define what a railway station. That will be out of box. So, and what definition you will write? Just go through economic surveys or NCRTs. Avoid newspaper. Do not use the language of journalist in your notes. See, editorial professors' language is different. They have a different frequency. But journalist and those first page and third, do not include that thing in your notes. If, let's say, this was the definition given in economic surveys, I've taken this definition from 2 different economic surveys. So now you will say how one is going to get this definition. I can say this definition comes naturally to me 80 to 90%. 100% is still it is not coming. It will take maybe say many years because it takes time. But how it came naturally to me? Because see, let's say you write something. You put it in notes, you revise it 7-8 times. Then you will say it will become part and parcel of your writing style. So let's see what the definition economic service gave. PPP are vital instrument for government in channeling the strength of private sector in critical areas of infrastructure. Can you see? This is simple definition. They are vital. You try to use language like this. Do not see. This is a government examination. So you have to use language the way NCRTs are written, policy documents, national health policy, national education policy, second-day RCs, your economy survey, that kind of language you have to use. And how you will develop that language? When you read and you take notes from those particular document, it will come naturally. I give you one more example, very related. See, this principle will apply not only in UPSC, but in other fields as well. There is a writer, Eleanor Cotton, right? Eleanor Cotton, she was Booker Prize at the youngest age. Just see what she said. She wrote some book. I cannot enumerate something, right? So what she said, I read Dostoevsky, 7-8 books. I copied notes and keep on revising. Or somebody will say, why somebody will revise novels? But she was doing that, and naturally the book she wrote, that was in the in the language of Dostoevsky. So it is not that she's copying Dostoevsky. It is not that you are copying economic survey. No, that language has imbibed in you. That process is more important. Okay. So this is the definition you can write. PPP is a vital instrument for channeling the strength of private sector in critical areas of infrastructure. PPP will help to address infrastructure gaps, right, and improve efficiency in infrastructure service delivery. Okay. So this is simple definition you can write. Now, question is why PPP required in infrastructure project? Then you can write a simple definition. PPP in infrastructure project required. See, आंसर तो सिंपल है कि क्यों जरूरत पड़ेगी उनसे फंड यानी they can provide funds, they can provide technology, right? There might be some synergies. So जैसे हम for example यहाँ भी लिखा है to access vital funds. This is simple definition. But now you have to use your your understanding which you have the things which you have learned during the UPSC preparation. Now you have to substantiate this. इतना लिखोगे तो क्या ये तो क्लास 12 का बच्चा भी लिख लेगा, right? उसके लिए तो आपको यानी सर्विसेज नहीं देंगे ना. So now how you can substantiate it? See this. For instance, by leaving the public asset and under national monetization pipeline. What the national monetization pipeline says? See, you must have read in economic surveys or in PIB documents. What this says, monetization means, let's say there is some public asset. उसको public private entity को दिया जाएगा on lease. It is not the permanent transfer. Remember, it is on lease, and it is a kind of transfer lease. कुछ समय बाद it will come back to public, and the money, the lease amount with the government will get, that might be used for other public project. So this is the way you can also say, for instance, and by leaving the public asset under the national monetization pipeline. Okay. See, ऐसे national monetization pipeline उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अब आप थॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो कि आप सिंपल उसको बोलो कि नेशनल मोनेटाइजेशन, उससे क्या हो रहा है?
but now you are connecting leasing the public asset under nation monetization to a private sector entity and then using the lease fund for other public purpose. Now see, इसमें कोई problem नहीं है. It is not against India's welfare goals, social goals, because that leasing is being done not on a permanent basis. It's not permanent transfer, and you are channeling those funds into other productive public projects. Then you can give an example in which by NHAI, you know, I cannot explain it here, but prelims में भी question आया था इस पे. इसमें क्या है? Simple, it is a mechanism to get funds, and different investors will invest in it, and that will be channelized for PPP projects. Now let's see second point, to access technology. So okay, now this is simple. ठीक है, technology तो ठीक है, but how? Let's see. This is the way you can write. Now you know the national logistic policy has come upon, right? 2022 national logistic policy. I would suggest go through that national logistic policy, at least कुछ पेज पढ़ो, उसकी summary पढ़ो, right? Summary का मतलब वो नहीं कि executive summary जो उसमें है, उसका preface पढ़ो, right? Do not read too many secondary material. Once you have gone through, you have taken few points, उसको अपने notes में डालो. Introduction, conclusion क्या है ना, अपना set करके रखो. See, एक time पे जब आप preparation करते रहते हो, ये I think this happens with every aspirant. आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि क्वेश्चन क्या आएगा वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जीएस में वो दे आर वरीड अबाउट ओनली सम पर्टिकुलर थिंग. लेट्स सी नेक्स्ट ईयर आल्सो दे आस्क अबाउट पीपीपी. तो इसके लिए आप ऐसे थोड़ा ना सोचिए क्या क्वेश्चन है. नहीं, आपका 2 पेजर रेडी होना चाहिए, आपका नोट्स रेडी होना चाहिए. आपको उसमें कंसाइज, यानी उस नोट से जो आपका नोट्स है ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उससे आप कैसे भी लिख सकते हो. 10 मार्कर, 15 मार्कर, वो प्रोसेस पे ध्यान देना है, राइट? तो क्या होता है प्रिपरेशन के समय, ये मैटर ही नहीं करता कि क्या क्वेश्चन आएगा. बस आपको टॉपिक पता है. 15-20 टॉपिक्स हैं GS3 में, उस पर आपका 2 पेज रेडी है. उसको सही से उसको इम्बाइब करो अपने अंदर और वो हो जाएगा. इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस, तो you can congratulate yourself and you can say okay, you are on the right track. ठीक है. Then what the national logistic policy envisions to develop a technology enabled, cost efficient, resilient and trusted logistics ecosystem for inclusive growth. Now this is technology enabled. This is this is an envision of a national logistic policy. So then you can relate it this way. Yeah, that's how private sector can help you access technology, right? Now to reduce logistic cost. Now इसमें logistic cost आप जानते हो इंडिया में high compared to OECD level. Now कभी-कभी एस्पिरेंट के मन में आता है हम क्या डेटा लिखें कि logistic cost इंडिया में 10% है, 15 है. See, do not worry about that. Write the way economic surveys write. क्योंकि फ्यूचर में आपको उसी तरह देखना है ना. जैसे आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट, हु राइट्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, राइट? किसने लिखा है? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, राइट? तो वो आपको भी वही काम करना है. सो यू बेटर यू डेवलप दैट लैंग्वेज नाउ. तो आप देखो, सपोज ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट किस रेंज में है, तो आप उस तरह लिखो द वे इकोनॉमिक सर्वेज हैव रिटन. लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया हैव बीन in the range of 14 to 18% of GDP against the global benchmark of 8%. सिर्फ एक रेंज है. कोई आपको खुद भी सोचना चाहिए कौन एग्जैक्टली मेजर कर लिया कितना लॉजिस्टिक कॉस्ट है. उसमें इतने सारे पैरामीटर्स हैं, राइट? इनपुट्स हैं. सो प्राइवेट सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म, राइट? DSS आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, राइट? सो through that also you can make your logistic efficient. Now to share risk. अब तो रिस्क हो गया. आप देख रहे हो पॉइंट तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है कि टू शेयर रिस्क, टू शेयर टेक्नोलॉजी, टू गेट फंड. बट उसको जो सब्सटेंशिएट किया है, एलेबोरेट किया है, वो वहाँ पे पूरा गेम है. सो शेयर रिस्क. अब आप कह रहे हो शेयर तो रिस्क है, ठीक है. अब इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि BOT के बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के 2 मॉडल होते हैं, टोल एंड एन्युटी. एन्युटी जिनको नहीं पता, एन्युटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, यानी ईयरली, राइट? लेट्स से यानी आपको बता दो एक फॉर्मूला होता है
A upon I in finance, what it means कि आपसे let's say I invest some money 100 rupees और कोई मुझे बोलता है आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करो और आपको पूरी लाइफ 10 रुपीज मिलेगा, राइट? सो वुड यू लाइक टू डू दैट? सो यानी सिंपल क्या है, यानी आपको समझना है एन्युटी का मतलब क्या है कि 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और आपको पूरी लाइफ 10 मिलेगा या जो भी नंबर आप लो, यानी लेकिन कंसेप्ट क्या है कि पूरी लाइफ, राइट? एवरी ईयर यू विल गेट 10. ओके, so this is what, and if you have to calculate the what is the rate of return and what is the cost of capital, you will simply use the formula. ये GP का infinite series वाला formula है, A upon I that is 10 और I आपका कितना हो जाएगा 0.10 होगा तभी 100 आएगा, right? So this means your you can say opportunity cost or rate of return is 10%. So ये concept है annuity का. So what it says, to share risk. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बीओटी टोल वाला जो मॉडल है उसमें ट्रैफिक रिस्क किससे बॉर्न किया जाता है? इज बॉर्न बाय द पीपीपी कंसर्नर, व्हाइल इन द केस ऑफ बीओटी एन्युटी इट इज बॉर्न बाय द पब्लिक अथॉरिटी. ये थोड़ा टेक्निकल, आई अंडरस्टैंड, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट हो गया, बट अगेन इफ यू कैन, यानी आपके माइंड में आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया हुआ है, सो ये आपकी उस फील्ड में एक्सपर्टीज है, देन यू कैन राइट, नो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. Now, let's say other thing, to support the vision of national infrastructure pipeline, right? So आपको पता है national infrastructure pipeline यानी 5 years के लिए 111 करोड़ का 1 लाख करोड़, what is 111 करोड़, right? And PM गति शक्ति, ये दो फेमस स्कीम्स हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ जस्ट उसका नेमिंग नहीं करना है, उसमें बताइए क्या, फॉर इंस्टेंस द प्राइवेट सेक्टर कैन टेक अप इवन फाइनेंशियली अनवाइबल बट सोशली इकोनॉमिकली ड्राइवेबल प्रोजेक्ट अंडर, आप जानते हो वाइबिलिटी गैप फंडिंग, VGF आपने यानी पढ़ाई होगा. सो दिस इज द वे यू कैन रिलेट कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर विल ओनली टेक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स. देयर इज अ प्रोविजन इवन अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड PM गति शक्ति दैट दे विल प्रोवाइड वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट व्हिच आर नॉट इकोनॉमिकली वाइबल. लेट्स से गांव में रोड बनाना है या अंडमान निकोबार में कोई एक आइलैंड पे लेट्स से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, although I don't know उसका क्या मीनिंग है. Sometimes no communication is better than communication, but anyway, let's assume कैसा है, तो वहाँ पे कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन? That is socially but it is socially required, so the government will say okay, you please do it and we will provide the provision of public funding, right? Now come to the second part. See, इसमें मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा है, I understand, थोड़ा सा आंसर ये नहीं है, बट अगेन आप सी लेट्स से आई एम इन एग्जामिनेशन सिनेरियो, आई विल राइट इन अ वेरी फुल फ्लो. इसको मैंने थोड़ा सा ना आई गिव इट डीप थॉट, जैसे राइट लेट्स से योर काइंड ऑफ अ पब्लिशिंग बुक, उसमें आप जैसे लिखते हो. सो बट अगेन दिस काइंड ऑफ थॉट यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन योर मेंस आंसर, एंड इफ यू डू दैट आई वांट टू अश्योर यू विल डेफिनेटली गेट 115 प्लस in GS, not only 1 year, year after year. Okay. Now come to the second part, role of PPP in the development of railway station. See, the keyword here is railway station. ऐसा नहीं कि आप पूरे रेलवे की बात करने लगो. Okay, railway station. So आप सोचो जल्दी नहीं, अब आपके माइंड में आएगा कि इसके लिए डेटा बहुत कम रहेगा आपके, क्योंकि आप इस पे बहुत चांसेस है. इस तरह क्वेश्चन है जो आपको मजबूर करेगा एग्जाम में सोचने के लिए. आप सोचिए ओके रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है, यू विल से ओके उनका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ कुछ स्टेशंस हैं जो कि रिवैम्प हुए हैं, अब कैटरिंग की सर्विसेज, राइट, ऑक्सिलरी सर्विसेज, कैटरिंग, टिकटिंग वगैरह, आई एम नॉट श्योर कि प्राइवेटाइज हुआ है अभी, लेकिन जो बाहर की जो लैंड है उसको लीज कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ थॉट विल कम इन योर माइंड एंड देन यू विल ट्राई टू यूज पुट दो थॉट इन द लैंग्वेज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, UPSC लैंग्वेज. So for example, management contracts like BOT, HM, there are many contracts. TOT. अब सी अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे फुल फॉर्म लिखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है. आप यदि फ्लो में हो, आपका आंसर ने आपने दिखा दिया कि आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम में एग्जामिनर को, तो आप उसमें भी लिख सकते हो. ये सब चीज़ों में वरी मत करो कि मुझे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, राइट, एन्युटी मॉडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, ये सब फुल फॉर्म लिखना है. ये सब छोटी चीज़ें हैं. बड़ी चीज़ क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
Management contexts like BOT, HEM, TOT, etc. facilitated development of various railway stations, right? For instance, एक आपको पता है नहीं, पहले इसको people knew it by Habibganj. It's a beautiful place, but now it is called Rani Kamlapati railway station. It's it's a very beautiful railway station. It's near Bhopal, and you must see it, right? So through a station like this can be developed through management context like BOT and HM. Then comes the leasing of physical asset on and around railway station. आपके रेलवे स्टेशन के आसपास की जो लैंड है उसको लीज कर दिया, एंड देन अगेन थ्रू विच पॉलिसी, नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी उसके थ्रू, एंड जो आपकी लीज अमाउंट है उसको रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं. फाइन. इसका एग्जांपल भी कोट कर सकते हो इफ इट कम्स टू योर माइंड, दैट इज गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल. व्हाट इट इज हैपनिंग कि यानी जो स्टेशन के आसपास की जो लैंड है उसको आपने लीज किया है टू डेवलप कार्गो टर्मिनल, राइट. मेकिंग एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, दैट कैन बी द सेकंड रोल. फॉर इंस्टेंस फूड ऑन बोर्ड, जैसे फूड ऑन बोर्ड एक स्कीम चल रही है, राइट. हाइजीन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स, this can be this in this private sector can play a big role, right? Okay, now this such question also ask you to show your knowledge. See, एक तो knowledge होता है कि show and pomp, नहीं वो नहीं होना चाहिए, but telling them, okay, I know the big picture, I know not only what is happening in railway now in this economic survey, but I have the picture, what has happened in 3-4 years. So and see, that comes through when you read last 2-3 years. अब इतना सजेशन है कि 3-4 साल के सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आपके माइंड में छपे होने चाहिए, राइट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. उसके सो इफ यू नो दैट, देन ऑटोमेटिकली विवेक देवराय कमेटी विल कम टू योर माइंड. विवेक देवराय कमेटी 2015, it recommended that railway stations should focus on core activity, that is their operations. See, what happens in Indian Railway operation planning, right? And even authority. See, let's say उसमें जो ऑपरेशन जो है एंड रेगुलेशन, ये एक ही बॉडी के में इनबिल्ट है. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम. ट्राई टू यूज दैट वर्ड, लेकिन ऐसे सुपरफिशियली, जब उसको मीनिंग हो एग्जैक्टली आपके माइंड में इम्बाइब्ड हो कि व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम. इफ यू विल यूज एजेंसी प्रॉब्लम, दैट रेलवे स्टेशन हैज एजेंसी प्रॉब्लम, तो प्रोफेसर तुरंत बोलेगा, ओके, नाउ दिस एस्पिरेंट नो समथिंग. एंड बट अगेन, इफ यू नॉट रेड एजेंसी प्रॉब्लम, इफ रेड ओनली सुपरफिशियली, डू नॉट यूज दैट. सो एजेंसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑपरेशंस और रेगुलेशन एक बॉडी में नहीं होना चाहिए, राइट. रेगुलेटर, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, राइट. वो एक रेगुलेटरी बॉडी है. आपके जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, वो सब ऑपरेटर्स हैं, तो इसका सेपरेशन होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट विवेक देवराय कमेटी सेड, रेलवे शुड फोकस ऑन कोर एक्टिविटी, और बाकी जो एक्टिविटी है दैट कैन बी आउटसोर्स, एंड इन दैट प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले रोल. सेकेंड, लास्ट पॉइंट, preserving natural and cultural heritage. This is also very important. If you have seen, CST, Chhatrapati Shivaji Terminal in Mumbai, earlier it was known as Victoria Terminal. It is a wonderful, building, and if I'm not mistaken, it is a UNESCO World Heritage Site as well. It is a UNESCO World. इसका जो maintenance है, that is going through some, I do not recall that body, और उसको but the main idea is they are maintaining that body, that building. So here also they can play a role. Now somebody will ask कि आपका conclusion क्या होना चाहिए. See, conclusion और intro का कोई side नहीं होता. Conclusion और intro में according to me is thought. आपका thought जितना refine, जैसे ज़्यादा refine होता जाएगा, आपके conclusion और introduction उतने better होते जाएंगे. हाँ, लेकिन एक चीज होना चाहिए कि introduction में जो question में है, जैसे इसमें PPP की बात हुई, तो you can write a definition of PPP. कंक्लूजन में फॉरवर्ड लुकिंग बात कर सकते हो, या कोई मोरलिटी की बात कर सकते हो. लेट्स से हियर यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ पे थोड़ा मोरलिटी की बात कर सकते हो, वे फॉरवर्ड बात कर सकते हो, राइट. सो लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर.
India wishes to be a developed country. Okay, country, developed country is missing by the 100 years of independence. ये विजन है इंडिया का, right? PPP in infrastructure can help achieve this dream. Okay, so this is the way. See, I have invested time in this question. Why I would have, I would have gone through, this answer just 2-3 minutes. क्या है जल्दी point. But the idea is that आपको यानी सिंक होना है उसमें, इसको समझो यानी किस तरह आंसर निकलता है. अच्छा, it takes a lot of hard work. Now we will move to question number 3. Today we are discussing question number 1, 3, 4. Next class में we will discuss the remaining 5 questions. There are total 8 questions in 2022 paper of GS3. Okay. So what are the major challenges of PDS in India? Keyword is challenges and how it can be made effective and transparent. Right? PDS. See, अब आपका PDS का 2-pager कैसे आएगा? आप कैसे बनाओगे? सी सिंपल, यूपीएससी के लिए क्लियर कट है. 2-pager मीन्स आपके जो नोट्स हैं उसमें क्या होना चाहिए. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने नहीं, यानी उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, लेकिन हाँ समरी वमरी नहीं पढ़ो, उसको खोलो, उसकी पीडीएफ देखो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन करो. शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन एफसीआई. उसको थोड़ा उसी की लैंग्वेज के पॉइंट्स अपने उसमें डालो. राइट? शांता कुमार वाज आल्सो मिनिस्टर. राइट? देन उसके बाद जस्टिस वाधवा कमेटी थी. ओके, अब ये मत सोचो कि ये बहुत पुरानी हो गई. उनके जो थॉट्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो दे आर स्टिल रिलेवेंट. आप डेटा करंट ले सकते हो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से, लेकिन ये जो लैंग्वेज है आपकी जो फाउंडेशन बनाएगा. ओके, फिर आप इकोनॉमिक सर्वे तो आप रखोगे. राइट? इकोनॉमिक सर्वे तो टॉप पे होना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, किसी में भी आप जो भी चैप्टर है फूड पे पीडीएस पे, उसको अपने 2-pager में डालो. इसको लिखो 1000 वर्ड, उसको रिवाइज करो, देन ऑटोमेटिकली 3-4 बार रिवीजन होंगे, देन यू विल से ऑटोमेटिकली आंसर निकल आएगा. इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और प्रोसेस है, और देयर इज नो शॉर्टकट. ओके, नाउ लेट्स से व्हाट इज द डेफिनेशन यू कैन राइट. नाउ सी दिस डेफिनेशन, you will say how it will come. PDS is an institution mechanism to procure food and distribute it to entitled population through fair price shops. Okay. This is the definition given by, I found it from the, if I'm not mistaken, Justice Wadhwa Committee report. I'm not sure, but yes, one of these. So, very simple definition. Can you see? No shoe and pomp, simple institution mechanism to procure food and distribute it to population through fair price shop. PDS not only alleviate poverty, but also facilitate attainment of food and nutrition security. Right? आपने SDG 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे. मेजर चैलेंजेस, द क्वेश्चन है मेजर चैलेंजेस. मेजर चैलेंजेस क्या है? कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है. ओके, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर. Many entitled citizens under National Food Security Act 2000. See, National Food Security Act entitles almost 75% population. अभी कोविड के समय तो 80.81% को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. अभी भी चल रहा है. राइट? एंड सो many they are excluded while non-entitled being included. ये बड़ी प्रॉब्लम है. लीकेजेस. राइट? See, ये तो ठीक है, ये तो आप सब समझते हो, लेकिन एक चीज और समझो. Here I want to connect स्टैटिस्टिक्स एंड दिस थिंग. सी, अब आप बोलोगे कि एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर इतने सालों से चल रही है, क्या हो रहा है इंडिया में? यानी लोग आंसर लिखना अलग बात है, बट प्रॉब्लम जो रियली में जिसको फूड मिलना चाहिए था बेसिक, उसको नहीं मिल रहा है. तो क्या प्रॉब्लम है? क्या इतने इंटेलेक्चुअल है इंडिया में, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम? क्या उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, फिलॉसफी नहीं है? वाई दिस प्रॉब्लम? ठीक है, धीरे प्रॉब्लम की करप्शन का है, उसको यानी वो बहुत बड़ा, वो अपना इतना बड़ा टूल है. बट देयर इज वन मोर थिंग, and this is logical thing. What it says कि exclusion और inclusion errors को कभी भी completely eradicate नहीं कर सकते. Try to think what I'm saying. Think about it carefully. Statistics में भी एक concept होता है. I do not want to discuss statistics here, but again इसको बोलते हैं type 1 error and type 2 error. इसको type 1 error का मतलब क्या है? जो लोग डिजर्व करते थे उनको नहीं मिला. राइट? एक्सक्लूजन एरर. राइट? तो टाइप 1 एरर एक्सक्लूजन हो गया. राइट? और टाइप 2 होता है जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मिल गया. फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में
let's say you deserve to qualify UPSC but you could not qualify, so that is type 1 error, that is a UPSC problem, not your problem. Type 2 error कि मान लीजिए आप कोई डिजर्व नहीं करता था, उसका यूपीएससी में हो गया. खैर यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी में जनरली जो सेलेक्ट हो रहा है वो कैपेबल है, लेकिन हाँ बहुत से कैपेबल लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, ये तो समझ में आता है. सो दिस इज इंक्लूजन एरर. सो आई डू नॉट वांट टू गो इनटू स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जैसे जैसे आप डेटा को बढ़ाते हो, अभी आपका एक्सक्लूजन एरर कम करोगे तो इंक्लूजन एरर बढ़ जाएगा, और इंक्लूजन एरर कम करोगे तो एक्सक्लूजन एरर बढ़ जाएगा. दिस इज द टेक्निकल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. Okay, and why it happens, that is a theory I cannot deal here, but yes, remember this thing. When suppose you join as a somewhere, join services as a in policy making, maybe you will read some you will go into details. ये तो यूपीएससी वाला लेवल है, राइट? उसके बाद आप डिफरेंट बुक्स खोलोगे, उसको स्टडी करोगे, पॉलिसी रिपोर्ट पढ़ोगे, मे बी यू विल गो इनटू स्टडी, तो आप कहोगे ओह यस दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, सो आई होप आफ्टर 4-5 years perhaps you will understand it. Then second thing is instances of hunger while having high buffer stocks. Then this is a problem, right? In India there is a high buffer stocks, but still there is a hunger problem. See, यदि इंडिया अपने SDG 1, 2, 3 मेंटेन कर ले, इंडिया और अफ्रीका, तो वर्ल्ड के SDG 1 और 2 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, SDG 1, 2, 3, right? Now high buffer stock cost and increased carrying cost. भाई आप बफर कॉस्ट, wastage and deterioration, and proactive liquidation policy needed for excess buffer. Now see, ये लैंग्वेज किस तरह आती है? जब आपने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, राइट, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो आप देखोगे उसमें ऑटोमेटिकली ये वर्ड कई बार यूज किया है. देन ऑटोमेटिकली यू विल यूज प्रोएक्टिव लिक्विडेशन फॉर. क्या मीनिंग है इसका? कि मान लो बफर बहुत ज्यादा है और लोगों को फूड की जरूरत है, तुरंत उसको रिलीज करो टू द पब्लिक. दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव लिक्विडेशन पॉलिसी. यानी बफर ज्यादा नहीं रखना है, बफर रखना है यानी टू मीट योर emergency food needs, but not too much. Okay, leakages. Somebody say, okay, simple leakages मत लिखो आप, कि leakages कितना है, क्या है. आपको यदि डेटा देना है तो आप इस तरह दे सकते हो, the way you economic survey के as per NSSO. see, अब जब कोट करो ना, मॉस्पी को कोट करो, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, NSSO कोट करो, इकोनॉमिक सर्विस को कोट करो, राइट, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कोट करो, because these are the authentic. So here we have talked about as per NSSO round, these are survey rounds, right? This is NSSO is National Sample Survey Organization. It is a part of MOSPI. Leakages in PDS are enormous. कितना? 45 to 47. अब देख लो 50% तो ऐसे ही चला जाता है. So can you understand जो bottom population है इंडिया की, उसमें क्या नहीं, क्या कंडीशन है? So that's then quality fraud and skewed procurement. Quality fraud means आप यानी उसको क्वांटिटी तो पूरी दे रहे हो, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है. राइस है, मान लीजिए आपने खराब राइस दिया, व्हीट खराब दिया. स्क्यूड प्रोक्योरमेंट की मतलब आप सी होता क्या, राइस क्या है, मेनली हरियाणा से आ रहा है. इंडिया में जितना मिलिंग हो रहा है, सी फूड प्रोसेसिंग में जो मेजर जो मिलिंग होता है वो राइस का होता है, वो उसमें राइस में भी पंजाब और हरियाणा से होता है. ओके, सो दैट इज स्क्यूड प्रोक्योरमेंट. क्वालिटी fraud leading to substandardized food and skewed procurement results procurement of more rice and wheat. यानी राइस और व्हीट ज्यादा हो गया. कोर जो सीरियल्स हैं जो कि स्टेपल फूड है वो नहीं है मिल रहा कोर सिटीजन्स को. भाई ज्वार बाजरा भी तो खाना है ना. राइस और व्हीट से राजस्थान में कैसे काम चलेगा? जो ट्राइब से और जो गरीब लोग हैं उनको उनके बॉडी से कनेक्ट ही नहीं होगा. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर कल्चर. यदि मान लीजिए राजस्थान ट्राइब को राइस खिलाएंगे, they need jowar and bajra. Measures to make it effective and transparent. Now आप एक holistic आंसर भी लिख सकते हो, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ द शांता कुमार कमेटी एंड द जस्टिस वाधवा कमेटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड. आप बोलोगे कि ये तो पुरानी होगी. नहीं, सी वो रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन वो जो थॉट है, मान लीजिए कोई आप नई कमेटी बना देते हो, वो भी मोरलेस 80% उस रिपोर्ट में आप देखना कोई डिफरेंस नहीं होगा जो इन दो रिपोर्ट्स में बोला है. इवन आपके इकोनॉमिक सर्वे ना वो नया लगता ही है, हर साल नया है, बट वो ऑलमोस्ट 80-90% लास्ट ईयर का ही होता है, राइट. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? यू कैन इम्प्लीमेंट द जैम ट्रिनिटी. जैम यू नो, राइट, जनधन, आधार एंड मोबाइल. जैम ट्रिनिटी टू plug leakages and reduce inclusion error. However, democratic attitude. See, this is only technological solution.
but equally important is also to have a democratic attitude, so that people have to awaken the people morally, right? Why all this leakages are happening. Second is restructuring of FCI. Restructuring of FCI is very very important, and hand over procurement to experienced state. See, जो procurement हो रहा है वो जनरली FCI करता है, लेकिन स्टेट लाइक आंध्रा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दे आर एडवांस, तो उसमें ना उनका procurement सिस्टम काफी हाई है, तो और ये आपका एक तरीके से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाएगा. So this is a good point. Then bonus above MSP should be discouraged. जनरली आप जानते हो कि सी ये मत लिखिए कि नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट मत लिखिए कि पॉलिटिकल पार्टी देती है बोनस फॉर पॉलिटिकल रीजन. नहीं, उसका एक सोशल रीजन भी है, इकोनॉमिकल रीजन भी है. ऐसा नहीं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियन है करप्ट. नो, दे आर गुड पीपल अराउंड. सो बट यू से कि फॉर इफ यू गिव बोनस अबव MSP by states, that there should be some region, some constitutional region, some economic region, some logic, some contingency. So, but here you are writing bonus above MSP to be discouraged. See, you're not saying, you're not making a harsh statement should be, should never be done. To be discouraged. And defer NFSA effectation in state who have not. See, what is the meaning of नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 इफेक्टेशन? दिस मीन्स वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड है वो नहीं मिलेगा यदि आपका जो बेनिफिशियरी की जो लिस्ट है उसको डिजिटाइज नहीं किया है. वंस यू हैव डिजिटाइज्ड, आप उसको आधार के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. दैट विल रिड्यूस योर लीकेजेस. दैट इज द आइडिया. देन ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ट्रांसफर. नाउ यू हैव टू टेक दिस point with a grain of salt. Although I've written that gradual, see here even the language is gradual introduction. It's not that it's not like DBT should transfer subsidy. No. See, if you remember, Pondicherry में problem हुई थी. Pondicherry में they moved to DBT and then they shifted back to subsidy model. So cash transfer is fine, but let's say आप cash transfer कर रहे हो, वो food वहाँ पे available ही नहीं है. So और ये inflation है, inflation को तो फिर भी DBT से इंडेक्स किया जा सकता है. But again, there are many cultural, social region that both subsidy and cash transfer, they should go hand in hand together. That is a finer understanding. कि ये बोलना कि DBT should replace price subsidy. No. Okay. So gradual introduction of cash transfer in PTC while maintaining. Now see, you write a statement like this: availability, accessibility, and affordability. So now how this phrase came to because this is the part of your, these three words are part of your NFSA. If you have read that, if you have made in your notes, it will naturally come to you. Availability, accessibility, and affordability of food grain, that should be maintained if you are going for cash transfer. See, UPSC में जो पूरा main जो crux है, first है आपका refined thoughts का, which come through practice, and second developing language. Okay. Other measures आप फिर आप लिख सकते हो. Adopt proactive liquidation policy. This I have already explained. Negotiated warehouse receipt. What it says? जिनको नहीं पता है negotiated warehouse receipt का मीन क्या है? Let's say farmer ने कुछ produce बनाया, right? सारे farmer का मान लो खरीफ सीजन है, right? उसमें आपने harvest किया. अब बहुत सारा यानी आ गया, right? चावल आ गया बहुत सारा, खरीफ राइस. अब मार्केट में क्या उनके रेट कम हो जाते हैं और फार्मर को इमरजेंसी होती है हमेशा, नहीं कुछ ना कुछ. सबसे ज़्यादा कंटीजेंसी तो फार्मर को ही है, तो वो लोग सस्ते प्राइस पे बेच देते हैं. तो व्हाट द गवर्नमेंट सजेस्टेड, रेदर देन सेलिंग इट एट फायर सेल प्राइस, you can put it in your warehouses, government warehouses, and from there you will get receipt, and on that receipt from bank you can get loan to meet your contingency needs. This is a wonderful mechanism. So that's why Santa Kumar committee said this should be taken upon priority. तो इसमें क्या ना, ये mechanism यदि strong हो गए तो farmers and especially small and marginal farmers, उनकी purchasing power, right, उनकी जो wealth है वो तो मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़ जाएगी, but yes, their condition would be slightly better. Third, establish anti-hoarding cells. This is even आपका Essential Commodity Act जो है उसका भी part है ये, and anti-hoarding cell and district vigilance committee, end-to-end computerization of food management system. Not only food beneficiary list, food management system. कितना calories है,
food management system is a much higher, much bigger umbrella term. Then let's see what we have written introduction, conclusion here. See, this question was about challenges and efficiency and transparency. यानी कुछ problem है इंडिया में. तो यहाँ पे what we have tried to bring something moral thing. So what we are saying, good and ethical governance must be introduced in the mechanism of PDS because achieving SDG 2 zero hunger is also a moral imperative. So आपने technical बातें की, फिर यहाँ पे इसको you can bring moral aspect because this question is really very very important, not only from UPSC perspective but from the society as well. Let's see the next question. Elaborate the scope and significance of food processing industry. Again, इसके लिए आप क्या करोगे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सबसे पहले यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 2 पेजर में क्या क्या होना चाहिए. यदि वो नहीं है तो प्रॉब्लम है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. I could have shown you a 2 पेजर, बट अगेन यहाँ पे आप क्या याद रखो. सबसे पहले तो आपके 2 पेजर में लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 2013 से किससे फूड प्रोसेसिंग के जितने भी क्वेश्चन आए उसको लिख लो. अब सोचोगे इसका क्या. सी, जब क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है ना लास्ट ईयर्स के, उसको ही यूज करके आप नेक्स्ट ईयर के आंसर भी लिख सकते हो. ये आपका GS4 में बहुत अप्लाई होता है. GS4 के जो सेक्शन के जो स्टेटमेंट है उसको अपने नोट्स में डालो और उसको इथिक्स वाले पेपर के, और उसको यानी वो स्टेटमेंट से आप आंसर लिख सकते हो. इसी तरह सारे 2 पेजर में काम करना है. आपके जो लास्ट ईयर्स के UPSC क्वेश्चन है इस रिलेटेड टॉपिक के, उसको अपने 2 पेजर में डालो. देन इकोनॉमिक सर्वे से फूड प्रोसेसिंग का चैप्टर रीड करो, राइट. देन NCERT से, ओके. देन आप कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जैसे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल फार्मर पॉलिसी, राइट, उसमें यदि आपको कुछ मिले. सी, आपका जो एग्रीकल्चर और ये कनेक्टेड है. So national farmer policy, that is wonderful policy. National farmer policy 2007. You must read this policy. अब ये मत सोचो पुरानी हो गई. इसकी जो लैंग्वेज है वो यदि आप वो रिफ्लेक्ट कर दो उसमें अपने पेपर्स में, इसमें, oh my God, then you will say कि कोई कहता है ना कि कैसे आते हैं GS में 450 प्लस 460 प्लस, वो ऐसे आते हैं. कैसे आते हैं? जब आप when you put hard work at the right place. तो ये सब काम करके आपका 2 पेजर डेवलप हो जाएगा. एंड सी, ये जो रिपोर्ट्स हैं KPMG का, मैकेंजी वाला, दे आर गुड रिपोर्ट्स, बट आई वुड रिकमेंड कि ये सब काम अब तभी, उसको पढ़ने का तभी जरूरत है जब ये इस पे यहाँ से रिसोर्स नहीं मिल रहा है, और वो ऐसा होगा नहीं, यहाँ से रिसोर्स मिल ही जाता है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो. नीति आयोग की रिपोर्ट चाहिए, राइट. नीति आयोग का तो 5 ईयर प्लान्स थे. 5 ईयर प्लान्स जो थे ना, आप ये मत सोचो कि वो बेकार हो गए हैं, दे आर आउटडेटेड. नो, इवन आपके सेकंड ARC वो भी आउटडेटेड. सी, जो लैंग्वेज है, जो द वे ऑफ वर्ड से, जो अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. सो द क्वेश्चन इज क्लियर. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 2 पेजर कैसे डेवलप होगा, जिस तरह. और इसका 2 पेजर हम you will find these answers and the 2 पेजर in the link of this video as well. Now see what it says. Food processing industry is a sunrise industry and it links agriculture and industry. ये आपके यानी इस तरह आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो. एक्चुअली ये स्कोप, ये केवल पहले स्कोप लिखना चाहिए था, बाद में सिग्निफिकेंस. आफ्टर 4 पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस, ठीक है. यानी स्कोप का क्या मीनिंग है कि इसका क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, राइट. सो लेट्स से इंडिया हैज डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन एंड लार्ज रॉ मटेरियल बेस, बट प्रेजेंटली ओनली स्मॉल परसेंटेज फूड इज बीइंग प्रोसेस्ड. उसमें मेनली क्या क्या प्रोसेस हो रहा है. राइस है, कि मेजर चंक कहाँ से चला जाता है, राइस से हो जाता है, ग्वार गम से हो जाता है, राइट. बफेलो मीट प्रोसेसिंग है. तो आपका यानी रॉ मटेरियल बहुत है, फूड रॉ मटेरियल, और एग्रो क्लाइमेट कंडीशन भी 22-24 टाइप से है. कोपन क्लासिफिकेशन है इंडिया के लिए, राइट. दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी दे विल नो इट. कोपन, त्रिवार्ता. सो दे हैव क्लासिफाइड इंडिया इनटू मेनी जोन्स. सो इसलिए इसका बहुत बड़ा स्कोप है. सेकंड, इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट. India is, in fact, if I'm not mistaken, the largest producer of buffalo, exporter and producer of buffalo meat, not cow meat, right? We have to be cautious. In fact, जो बांग्लादेश को बहुत एक्सपोर्ट होता है. इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं बांग्लादेश का जो ब्रेकफास्ट होता है वो इंडिया के बफेलो मीट से होता है. ओके. पल्सेस, मैंगोज, hence can generate employment and foreign currency exchange through food processing. This is one scope.
Now India wishes to position itself as a food basket of the world, right? India के बहुत सारे एस्पिरेशन है, नो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, डेवलप्ड नेशन बाय 100 independence here, food basket of the world. Okay, so how it can by export of processed food, basmati rice, guar gum, buffalo meat. See, एक और चीज आप समझिए, आपको इफ यू कैन रिकॉल इन 2017 और 16 में, 17 और 18 में एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स में ग्वार गम के ऊपर. आपको सोचो कि ग्वार गम पे यूपीएससी क्यों क्वेश्चन पूछा है. ठीक, यूपीएससी क्यों पूछा था, नहीं एक्सपोर्ट वगैरह कुछ था, देख लेना प्रीलिम्स में था, जीएस का जो पेपर आता है प्रीलिम्स में, उसका मीनिंग क्या है. सी, जब कोई चीज इंपॉर्टेंट है, लेट्स से इंडिया का जो ग्वार गम है वो एक्सपोर्ट हो रहा था बहुत ज्यादा यूएस में, और उसका प्राइस बहुत हाइक हो गया बिकॉज दिस ग्वार गम वाज बीइंग यूज्ड फॉर इन शेल फ्रैकिंग. यू नो, शेल जो गैस निकालते हैं उसको निकालने का जो प्रोसीजर है उसमें इसका बहुत यूज था, तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ गया. एंड सो यू मस्ट नो, कुछ ऐसा ना आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो रहा है जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो यू मस्ट नो दोज थिंग्स. So this is one thing. Now, okay, what else can be there? It's called disguised unemployment. Disguised unemployment. Again, disguised unemployment पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है कि there was an option. What is disguised unemployment? That when the marginal productivity of labor is zero, that is called disguised unemployment. तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी पता होना चाहिए. ओके, ऐसे नहीं कि छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, नो, वैसे काम नहीं चलेगा. ओके, disguised unemployment in rural India can be ameliorated through employment opportunities in food processing sector. See, food processing sector में जो सब दोनों है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों है, राइट. तो उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं एक्सपेक्ट नहीं चाहिए, आपको कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको हायर मैथमेटिक्स नहीं जाननी है. तो वहाँ पे जो रूरल यूथ है which is going through this problem of unemployment, disguised unemployment, that can be, used for not only for gainful employment but also to develop their skills. अच्छा, आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेशनल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल अर्बन. सी, फीमेल अर्बन का जो लेबर फोर्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कीजिए. फीमेल अर्बन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओके, दैट इज इवन लेस देन फीमेल रूरल. आप बोलोगे अब ऐसा क्यों हो रहा है? सी, इसके दो रीजन है. एक तो सोशल एटीट्यूड्स हैं कि नहीं, वुमेन शहर में आई तो दे कैन नॉट गो आउट फॉर जॉब जब तक ये नहीं. सी, एक तो शहर में जो सिटीज में कुछ सर्विस सेक्टर में जॉब्स हैं एलीट के लिए, लेट्स से सम वुमेन वर्किंग इन कंसल्टेंसी फर्म्स, राइट, वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो अलग जॉब्स हैं. लेकिन जो छोटा मोटा जॉब्स है, राइट, फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके लिए सोशल एटीट्यूड्स आर नॉट अलाइंड. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन. और दूसरा क्या है, उसको वुमेन को खुद ही उसमें कोई मीनिंग नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं मिलता है. तो सेकंड थिंग, इन फीमेल रूरल क्या है, रूरल एरिया में ड्रेजरी बहुत है भाई. गांव में वुमेन इज वर्किंग इन फील्ड, तो उसको एम्प्लॉयमेंट तो बोलोगे आप, तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट का कोई मीनिंग है. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. और ये नॉट ओनली, ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत हाई है, और ये दिस पॉइंट हैज बीन रेज्ड इन मैनी रिपोर्ट्स ऑफ यूएनडीसी. तो प्लीज note it down, this point. Now we are talking about the significance. RBI granted priority sector lending to food processing infrastructure, and the government of India accorded high priority and to food processing under national manufacturing policy, right? इस तरह आप कनेक्ट करो कि आप ऐसे सिंपल बोल दो कि RBI ने ग्रांट किया प्रायोरिटी सेक्टर, ये तो हर कोई जानता है, बच्चा जानता है. बट when you say government of India also accorded high priority to food processing under national manufacturing policy, right? This will attract capital expenditure. See, capex is important. अब आपको बताइए, इस साल एक क्वेश्चन था 2022 में कि इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है, that is happening through efficiency of the manpower, right? लोग efficient हो रहे हैं, उससे ग्रोथ आ रही है जीडीपी में. आपको जैसे पता है, राइट, हम लोग क्या, फॉर एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, दे नो दिस थिंग, y is equal to F K N, right?
तो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो आपके फंक्शन है, तो किससे आ सकता है? या तो कैपिटल से आ सकता है, ओके, या लेबर से आ सकता है। तो कैपिटल जो कैपेक्स वाला जो पार्ट है, जो न्यू एक्सपेंडिचर, वो बहुत लिमिटेड है। अभी तो हो गया कोविड के समय, पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड तो कैपेक्स बढ़ा है, राइट। लेकिन इफ यू सी द बिग पिक्चर लास्ट 15-20 ईयर्स, तो इसका रोल बहुत लिमिटेड है। कैपेक्स से ग्रोथ नहीं आ रहा है, ग्रोथ किससे आ रहा है? टू इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। आप बोलो कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन किससे हो रहा है? सर्विस सेक्टर में लोग इफिशिएंट हो रहे हैं, राइट, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं जॉब क्रिएट हो रहा है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मेक इन इंडिया था, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल गॉट जॉब थ्रू नेशन मेक इन इंडिया। सो that's why this can attract the capex, and that will help not only generate employment but also enhance GDP. Now next point, you can talk about the cluster based development. See, cluster based development, how I spoke model, there are two different models. Simple क्या है cluster based development का? इस तरह समझो, आपने you must be knowing, let's say सूरत में क्या, जैसे आप सूरत सुनते हो आपको याद आता है डायमंड पॉलिशिंग। आप उसको बेल्जियम से कनेक्ट करते हो, वहाँ से आता है, राइट। सूरत में पॉलिशिंग होती है, फिर वो चला जाता है। इंडिया इज ए बिग इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड, राइट। जैसे क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल के लिए भी सिंपल है, इंडिया इज ए बिग इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे रिफाइंड हो रहा है, मथुरा की रिफाइनरी अभी कुछ साल में बंद डेवलपिंग कंट्रीज है तो रिफाइनरी सब ना। अभी यूएस में कोई, स्विट्जरलैंड में कोई रिफाइन करेगा? वहाँ पे लोग कहेंगे कि I do not need that oil, I have a different quality of life. So इस चीज को क्लस्टर बेस का मतलब क्या है कि जैसे सूरत में बहुत सारे डायमंड पॉलिशर्स एक साथ आ गए, सो ऑल्दो आपको लगता है कि मान लीजिए 5-6 शॉप एक साथ आ गई तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं, उससे टोटल अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर भी बढ़ता है, टोटल मार्केट भी बढ़ता है। सो दैट इज व्हाट, दैट्स व्हाई दे एनकरेज क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। एंड इससे क्या है कि आपकी जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज है वो भी उसके अराउंड डेवलप हो सकते हैं। लेट्स से फूड प्रोसेसिंग के ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज क्या होंगी? मान लीजिए कोई पैकेजिंग वाला है, ओके, कोई ट्रीटमेंट वाला है, हीट ट्रीटमेंट, जो फूड को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। देन उसके बाद रॉ मटेरियल को क्लीनिंग, तो डिफरेंट ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट्स व्हाई क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट इज important, and that's why they suggested cluster based development of food processing industry, and focus on convergence, delivery and strong partnership with the farmers will empower small. See, whenever you talk about farmers, small and marginal की जरूर बात कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर है। ये आपकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, सबकी इसका पर्पज क्या है? नेशनल फार्मर पॉलिसी। सी, व्हेन यू रीड नेशनल फार्मर पॉलिसी, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई फार्मर मीन्स नेशन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। उसकी बात पे यही उसके लिए ज्यादा है। कुछ तो फार्मर हैं, राइट, उनके तो फार्म हाउस है बड़े बड़े, उनके लिए क्या है, वो तो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, और दे ओके। नाउ यू कैन राइट फ्यू मोर पॉइंट्स यहाँ पे। ये अदर स्कोप्स एंड इसको, ये नहीं, इट्स नॉट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यानी यू कैन सिंपली राइट अदर, यानी ये थोड़ा वर्ड रॉन्ग यूज हो गया है। यू कैन सी अदर पॉसिबिलिटीज, राइट। सो सपोज यू यूज दिस काइंड ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, HACCP। आपने रेलवे स्टेशन पे यदि अपने जूस पिया होगा तो यू मस्ट हैव बीन नोइंग दिस मार्क, HACCP, टू बूस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट। if you have this if you adopt these measures, that will help you boost your export. आपने प्रीलिम से क्वेश्चन भी आया था, फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बेसिस। व्हाट आर फाइटोसैनिटरी मेजर्स? फाइटो इज हीट, सैनिटरी यानी जो फूड है वो प्रॉपर्ली ट्रीटेड होना चाहिए। जैसे मीट है, राइट, सपोज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग बफेलो मीट, तो वो प्रॉपर्ली ट्रीटेड होना चाहिए। It should pass phytosanitary measures, and it will pass when we will follow this TQM HACCP. Then mega food park development and integrated cold chain management. Cold chain को बहुत important है, पिकल बनाना है, पिकल is a value addition, right? So उसके लिए क्या है? You have to store the mango or whatever fruit. Then 100% FDI allowed under
100% FDI allowed under automatic route. ये आपको पता होना चाहिए what is automatic route. नहीं तो किसी और दिन डिस्कस करेंगे. I don't want to that. See now this statement, role of supermarket to eliminate intermediaries. ये क्वेश्चन था यूपीएससी का. आप देखिएगा 2015-16 किसी में, what the role supermarkets can play to eliminate intermediaries. अब देखो क्या है, जैसे होता क्या है ना इंडिया में, भाई गांव से वो एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट, नो आई डोंट नॉट रिमेंबर द वर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं, दे प्रोक्योर रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर्स, और फार्मर को पता ही नहीं है किस प्राइस पे है. अब ये नहीं, आपको ये नहीं सजेस्ट करना है कि सुपरमार्केट वाले लोग देयर ओनर्स आर वेरी एथिकल. नो नो नो, फार्मर को कौन देने वाला, ना फार्मर को सुपरमार्केट देंगे ना ये देंगे इंटरमीडिएट. फार्मर हैज टू लिव इन कंडीशन ओनली. फार्मर को खुद आना पड़ेगा अपनी कंडीशन से बाहर. Okay, but again, you can explore this opportunity. Whether because see, for government it is easy to regulate supermarkets, लेकिन intermediates को कहाँ पकड़ेंगे, right? उनको तो it's difficult. So you cannot say that supermarket is better than intermediates. No. You can just explore that role. What the role they can play. Last one, you can say CAGR of food processing export has been around 23% as per the APEDA, right? आपको अब आपका होमवर्क है, APEDA देखेंगे आप, और CAGR का मीनिंग क्या है, CAGR का मीनिंग क्या है, कंपाउंडिंग जिसने पढ़ा है वो भी आप देखेंगे, राइट? ओके, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करना नहीं, इसका मीनिंग क्या है, सेंसिबिलिटी. जैसे मैं आपको सपोज कीजिए, मैं बोलता हूँ कि मेरा 100 रुपीज, ओके, what I will do, just a minute. मान लीजिए मेरा 100 था, फिर 120 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 200 हुआ. तो आप क्या बोलोगे, आपका ग्रोथ 100% बढ़ गया? आप इसको आइडेंटिफाई करो. 100 से 120 गया, 120 से 80 गया, 80 से 200 गया, तो आपका CAGR क्या हुआ? Okay, so that will give you understanding of CAGR. CAGR आपको समझना ही होगा. Do not say that I am a student of literature or नहीं. See, when you are joining administration, CAGR बिना पढ़े और बिना समझे आपका काम नहीं चल सकता. Thank you very much for. I hope you enjoyed the lecture, and we will discuss more questions, remaining question after a few days. Any question, any doubt, please comment. And this PDF also we will upload. Thank you.